So the differentiation of sine 3x will become 3 cos 3x. Differentiation of cos is we know minus sine. So cos 4x minus 1 की होगी minus 4 sin 4x minus 1. ये 4 कहाँ से आया? एंगल का डेरिवेटिव, क्योंकि फर्दर हम मल्टीप्लाई करते हैं. We know see the fourth example, this one. The differentiation of e raised to power x is e raised to power x. So what will be the differentiation of e raised to power 7x? So differentiation of e raised to power 7x will be e raised to power 7x. And multiply आप किससे करेंगे? The derivative of power, और power क्या है? 7x, उसका derivative है 7. So it will become 7 e raised to power 7x. Okay, ये हमने कुछ examples की थी कल. I hope कि आपको याद होंगी. See this example. Y is equal to ln tan x. Y, could you explain? Okay, y is equal to ln tan x. Okay, y is equal to ln tan x. We know कि ln x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1 over x. तो यहाँ पे है ln tan x. So the differentiation of ln tan x will be 1 over tan x, और फिर आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे tan x के डेरिवेटिव से, और वो tan x का डेरिवेटिव क्या है? secant square x. So it is secant square x over tan x. Then next, see this one, last example. If you have y is equal to sine of a function and that function is cos 3x. जी हमें पता है कि साइन, ये ओवरऑल एक फंक्शन क्या है? ये साइन लिखा हुआ है. डजंट मैटर ये किधर क्या आ रहा है, छोड़ दें इसको. हमें पता है साइन ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos of x. तो ये cos of x लिखा हुआ है. और फर्दर हमें क्या करना होता है? जो एंगल है, एंगल उसका आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं, और एंगल था cos 3x, and we know the derivative of cos 3x is minus 3 sin 3x. जी क्लास का टाइम 12 o'clock है, तो 12:05 के बाद अब नेक्स्ट टाइम अगर कोई आएगा तो उसके लिए मीटिंग रूम अनलॉक नहीं किया जाएगा. सो मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल हैबिचुअल हैं लेट आने के. ओके, हम कुछ अब फर्दर एक्सटेंशन करते हैं उन क्वेश्चंस की. ओके, नाउ इफ वी हैव होल पावर ऑफ साइन कॉस tan, या किसी की होल पावर अब कुछ आ जाती है. अभी तक हमने सिंपली sin x, sin 2x, sin 3x, sin 4x की डिफरेंशिएशन की है. Now we'll see how to differentiate sin square x, sin cube x, sin power 4x. इनको अगर हमने differentiate करना हो तो हम कैसे करेंगे? Before that, you should know कि if it is written sin square x, तो इसको हम लिख सकते हैं sin square x mean कि ये overall square है. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin x whole square. ये हमने AS में भी देखा था. लेकिन अगर कहीं लिखा हो sin x square, तो ये whole square है. This is a square only for the angle. मीन एक्स स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ एंगल के ऊपर, ये डिफरेंट है. सो इफ इट इज रिटन sin स्क्वायर x, वी कैन राइट sin x होल स्क्वायर, और इफ इट इज रिटन sin क्यूब x, वी कैन राइट इट sin x होल क्यूब. सो अब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है जिसमें होल पावर अदर देन 1 है, मीन 2, स्क्वायर आता है, क्यूब आता है, पावर 4 आती है, पावर 5 आती है, सो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सी इफ वी हैव अ क्वेश्चन like y is equal to sin 4x. So ऐसे क्वेश्चंस के लिए फर्स्ट वी विल अप्लाई द पावर रूल. पावर रूल मीन जो हमने एएस में किया था कि पहले आप होल पावर कोफिशिएंट बनाएंगे. सी दिस वन, दिस सेकंड रूल. खैर फर्स्ट रूल पावर रूल ही है. इसमें हम क्या करते थे सेकंड रूल में? होल पावर n, मिकाइल, होल पावर n कोफिशिएंट बनता था, बेस ax प्लस b एज इट इज, और होल पावर में से 1 माइनस, और फिर आगे क्या होता था? इनर का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई होता था. सो वी विल अप्लाई दिस रूल. इफ यू हैव sin स्क्वायर x, sin क्यूब x, sin पावर 4x, कुछ भी आए तो हम यही रूल अप्लाई करेंगे. कैसे? सी हियर. ओके, बिफोर दैट आई कैन राइट sin 4x
like this. इस तरह नहीं भी लिखते तो भी डायरेक्ट कर सकते हैं आप. So if I want to differentiate this, so I will apply the whole power rule. Mean 4 will become the coefficient. Sin x को differentiate करेंगे? No. Base will stay as it is. जब whole power rule लगाते हैं तो वो base उसी तरह रहती है, उसमें कोई change नहीं आता. और whole power 4 minus 1 is 3. और base का derivative, sin x का derivative आप आगे multiply करेंगे. Mean base is sin x and the derivative of sin x is cos x. So this is the differentiation of sin raised to power 4x. Mean you can write now your answer 4 sin cube x cos x. Okay, if we have y is equal to 3 cos cube x, 3 cos cube x. So 3 is a coefficient, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ही रहेगा. अगर आप cos cube को लिखना चाहते हैं पहले ऐसे cos x whole cube, so लिख सकते हैं हम. Now its differentiation is dy by dx, that 3 will stay as it is, और जो power 3 है वो coefficient बनेगा. तो जब वो coefficient बनेगा तो it will become 9 cos x whole power 2. And then the derivative of base, and base is cos x. And what's the derivative of cos x? Minus sin x into minus sin x. So our final answer, we can write minus 9 cos square x sin x. Okay, if we have y is equal to cos square x, y is equal to cos square x. G. Abdullah, what will be the differentiation of y is equal to cos square x? Yes, you are saying 2 cos x into times ब्रैकेट डाल लें into minus sin x, क्योंकि होल पावर रूल लगाया तो स्क्वायर 2 कोफिशिएंट बन गया और पावर 2 minus 1 is 1, और फिर cos x का डेरिवेटिव फर्दर इज minus sin x. So we have the final answer minus 2 cos x sin x. क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गई है. सॉरी, ये dy by dx लिखना था. सॉरी, बेहतर है थोड़ा सिंप्लीफाई, ये इतना तो करते होते हैं ना. 2 multiplied by 3 लिखा तो उसको 6 तो लिखेंगे ना आप. सो minus 2 cos x sin x, और इसको अगर वैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको नेक्स्ट स्टेप एक minus sin 2x, आई होप कि आप माइंड नहीं करेंगे इस बात को, और माइंड नहीं करेंगे और समझ भी आएगी ये बात कि आई कहां से आई. मोइज कामरान को समझ आ गई है, बाकियों को पता नहीं है मुझे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. जिनको नहीं समझ आई वो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक दोबारा पढ़ लें. y इज इक्वल टू, अगर हो हमारे पास, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा सा मुश्किल करने लगा क्वेश्चन. sin 4 2x, अब पावर तो 4 मैंने की, लेकिन एंगल मैंने x पहले करता रहा यूज थ्रू आउट, अब मैंने एंगल क्या कर दिया 2x. So if I want to differentiate this, this is written basically sin 2x whole power 4. Who will tell me the differentiation of this? G. Mikhail. ठीक, 8 sin 2x, that's it.
जी खदीजा, फोर साइन क्यूब 2x इंटू 2 cos 2x, बिल्कुल ठीक है। सो राइट, सो पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट वी नीड टू अप्लाई द होल पावर रूल। अगर मैं होल पावर रूल अप्लाई करूं, द होल पावर इज 4, सो 4 विल बिकम द कोफिशिएंट, मीन 4 साइन 2x होल पावर 3, ये होल पावर रूल लगाया। नाउ एज पर दिस रूल, अब फर्दर वी हैव टू multiply with the derivative of inner, with the derivative of base. What's the derivative of sin 2x? cos 2x। sin का डेरिवेटिव cos होता है, लेकिन एंगल क्या है 2x है, उस एंगल का भी डेरिवेटिव फर्दर मल्टीप्लाई होगा और वो क्या बन जाएगा 2 cos 2x। so the differentiation of sin 2x is 2 cos 2x। so our final answer will be that 4 times 2 is 8 sin cube 2x cos 2x। कहां पे 2x कैसे कैसे आया? y is equal to sin 3x। देखिए इसकी डिफरेंशिएशन क्या है, समझ आ गई? जी हसन। So if we bring cos before sine, would it not make a difference or would it be fine? Sorry, please repeat. So if we write it as 8 cos 2x sine cube 2x, will it be fine? Mean if you are saying कि if I write cos first and then sin second term, Yes, sir. no difference। 3 multiplied by 2 और 2 multiplied by 3 both are same, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना सब, That इस पर that ऑर्डर would में be लिखे fine, हैं। sir. Yes, 100% fine। Okay, next is if we have y is equal to, जी डिफरेंशिएट करें आप, 10 cube 2x, differentiate this 10 cube 2x। बेटा आप समझ ही नहीं रहे, आप कल भी नहीं समझ रहे थे, मैं कल भी आपको पॉइंट आउट किया था, लेकिन आप कोशिश ही नहीं करते, आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे, आपका माइंड ही नहीं होता यहाँ पे। आई एम रियली सॉरी टू से कि आप कोशिश ही नहीं कर रहे होते समझने की। आपकी टाइम होता है कि यार मैं कोई मौका मुझे मिले तो मैं कोई बात कर दूं, कोई और आउट ऑफ द टॉपिक करूं, मौका मिले तो मैं थोड़ी देर के बाहर चक्कर लगा के आ जाऊं। और ऑनेस्टली मैं ये बताऊं कि अगर आज जिसने कल लेक्चर लिया था, मतलब ये इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन हाँ अगर क्लास में बैठे हुए भी समझ ना आए, बहरहाल आप कोशिश करें, अभी भी अगर आप देखें तो आप समझ सकते हैं। जी इस्माइल, आपने कहा कि प्रीवियस क्वेश्चन कैसे हुआ। सो बेसिकली प्रीवियस क्वेश्चन में दैट वाज रिटन sin 2x होल पावर 4। सो पहले आई हैव अप्लाइड द होल पावर रूल, मीन होल पावर रूल में 4 कोएफिशिएंट बन गया, sin 2x एज इट इज, एंड द होल पावर 4 minus 1 is 3। ठीक हो गया। और फिर हम होल पावर रूल क्या होता है कि आपने इनर का डेरिवेटिव फर्दर आगे मल्टीप्लाई करना होता है। अब sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x सिर्फ नहीं होता, 2 cos 2x होता है, क्योंकि एंगल को भी आप फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं। So the derivative of sin 2x is 2 cos 2x। So this is a differentiation, 4 times 2 आगे 8 हो गया, sin cube 2x cos 2x। Is that clear now? जी, y is equal to 10 cube 2x। जी बताइए मोइस। 6 tan square 2x into secant square 2x, ये बोला है।
सीकेंट स्क्वायर एक्स, एंगल चेंज नहीं होगा। देखिए अगर tan 2x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर 2x ही होगा। एक 2 आपने मिस किया है, नहीं आपने 6 बोला स्टार्ट में, 6 आपने बताया, बिल्कुल ठीक है जी मोइस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो इफ वी डिफरेंशिएट, पहले अगर आप लिखना चाहते हैं इसको ऐसे tan 2x होल क्यूब, सो dy by dx इज dy by dx इज होल पावर क्या है, कोफिशिएंट बन जाएगा 3, और tan 2x एज इट इज होल पावर 3 minus 1 is 2, ये होल पावर रूल लगाया। अब इनर मीन बेस tan 2x का डेरिवेटिव फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, secant square x। So what will be the differentiation of tan 2x? It will be secant square 2x into 2, mean 2 secant square 2x. 2 secant square 2x. So our final answer will be 3 times 2 is 6, 10 square 2x secant square 2x. G, is that clear? Okay, write the next question. मैं बोल रहा हूँ ना, y is equal to e raised to power 5x, ये कल वाला क्वेश्चन है। We have y is equal to e raised to power 5x. डिफरेंशिएट करें इसको, y is equal to e raised to power 5x. ये जो क्लास में यहाँ बैठे हैं इनमें से किसको इसकी डिफरेंशिएशन नहीं आती? सबको आती है। रफे आप काफी दिनों बाद आए, चले मैं आपसे क्लास के बाद बात करूंगा। इधर कौन बैठा हुआ है? ओके, रयान जी, रयान वसीम। व्हाट्स, यस, बहुत इजी था ये, कल हमने इसके बहुत से क्वेश्चंस किए। dy by dx is equal to 5 e raised to power 5x. The differentiation will be 5 e raised to power 5x. Okay, now if we have y is equal to ln 3x, जल्दी से इसकी डिफरेंशिएशन बता दें। y is equal to ln 3x. जी रूल्स इतने मुश्किल नहीं है कि हमें बार बार देखना पड़े। साइन की कॉस, कॉस करिए माइनस साइन, tan secant square x, e raised to power x is e raised to power x, ln x is 1 over x. So here it is ln 3x. जी उमर, 1 over 3x into 3. So ln x की डिफरेंशिएशन होती है 1 over x. So ln 3x की क्या होगी, 1 over 3x into 3x का डेरिवेटिव इज 3. सो ये कैंसिल होके आपके पास 1 over x ही आ रहा है। ओके, y is equal to ln x whole cube. y is equal to ln x whole cube. जी आमिर, please switch on your camera. y is equal to ln x whole cube. So whole cube. So first we need to apply whole power rule. जी आयला, into 1 over 3x 1 over x. जी यही है। Yes, that's right.
So first you have applied the whole power rule, mean 3 becomes the coefficient ln x whole power 2. Then you need to differentiate ln x, and the differentiation of ln x is 1 over x. So the final answer is, that's the final answer. इसको ऐसे ही बेशक लिखा है. So you can write 3 over x into ln x whole square भी लिख सकते हैं, but that is fine. Okay, next if we have y is equal to, last question of this type, sine square x plus cos square x. No, cos square 2x. Differentiate this. Y is equal to sine square x plus cos square 2x. प्लस से, जिस तरह P1 में प्लस माइनस आने से सब कुछ सेपरेट डिफरेंशिएट करते थे, ऐसे ही करें. तो साइन स्क्वायर एक्स को अलग डिफरेंशिएट करें, कॉस स्क्वायर 2x को अलग करें. जी अब्दुल्ला, व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स? गुड, 2 sin x cos x. क्योंकि first you have applied the whole power rule. Whole power sin x whole square 2 will become coefficient sin x to power 1, and then the derivative of sin x is cos x. Okay, plus the differentiation of cos square 2x. Khadija. Right. So here again you need to apply first whole power rule, mean whole power 2 will become the coefficient, or whole power 2 minus 1 will become 1. So it is cos power 1, simply 2x, into the derivative of cos 2x is minus 2 sin 2x. Minus 2 sin 2x. So थोड़ा सा हम इसको simplify कर सकते हैं. So it will be 2 sin x cos x minus 4 cos 2x sin 2x. अगर आप चाहें तो we can write sin x 2 sin x cos x as sin 2x. Double angle identity apply कर सकते हैं. But our requirement is to simply differentiate, so we have done that. G, any question? Any problem? Okay, our next question is, we need to see how to differentiate when two functions or maybe more than two functions are getting multiplication or division. If I go back to P1 में अगर question था y is equal to say x square into x cube plus 1. This x square is getting multiplication with x cube plus 1. We don't know any rule to differentiate them unless we remove this multiplication. हम इसको अगर differentiate करना था P1 में तो कैसे करते थे? Do you remember that? हम multiply करते थे, x square into x cube is x5, x square into 1 is x square. Now once you have this, now they are written in the form of sum or difference. Product खत्म हो गया. Now we can differentiate them like 5x4 plus 2x. लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं कि अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूं कि इसको अलग डिफरेंशिएट कर दें मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज रॉन्ग. अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में तो वी डोंट नो द रूल फॉर द डिफरेंशिएशन, सो वी हैव रिमूव्ड द मल्टीप्लिकेशन साइन. प्रोडक्ट रिमूव कर दिया, सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिख लिया, तो अलग अलग डिफरेंशिएट कर लिया. इवन व्हेन देयर वाज डिवीजन लाइक दिस, if you have question x raised to power 5
plus 1 over x square. These are getting division. How to differentiate that? Do you know any rule? क्या हम इसको ऐसा कर सकते कि differentiation of numerator separately and differentiation of denominator separately? No, we can't do that. Sum और difference की फॉर्म में हम कर सकते हैं. So कैसे करते थे AS में ये क्वेश्चन? ऊपर भी लेके जाने वाली बात ठीक है, बट अगर आप यूं करें इसको x5 over x square plus 1 over x square, if you separate them, mean the denominator, so this will become x cube and 1 over x square. Now isko agar upar shift kar दें तो it will become x minus 2. Now they are written in the form of sum and difference. Now we can differentiate them, and it will be dy by dx is equal to 3x square minus 2x raised to power minus 3. So that is how you were differentiating the questions which were involving product and quotient, mean division. P1 में तो ये चल सकता था. क्यों? क्योंकि P1 में जो प्रोडक्ट था दोनों both the functions were algebraic functions. डिवाइड जो हो रहे थे, जो both were algebraic functions, तो उनको multiply divide कर सकते थे. But here we have studied different other functions as well. Mean trigonometric function, logarithmic function, exponential functions. अब अगर आपके पास क्वेश्चन हो कि differentiate y is equal to x square into sine x. Now if the question is you have to differentiate y is equal to x square sine x. Now these two are getting multiplication, Mikhail. X square is getting multiplication with sine x. So now these two are written in the form of product, multiply हो रहे हैं. तो क्या अब हम इनको सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं? आप उनसे कम है. मुझे लगता है ऑन हुआ ही नहीं है शायद इधर से. वेट कर लेते हैं. वो जब लाइट गई से बंद होके ऑन हुआ था. What was the purpose of differentiating algebraic function, Daniel? To get the gradient. So you will have trigonometric functions as well जिनके gradient आपको चाहिए होंगे. Okay, now see the question. I have written here y is equal to x square sine x. Now x square is an algebraic function and sine x is a trigonometric function. अब तो इनको multiply नहीं कर सकते. तो अब इसको हम differentiate कैसे करेंगे? Or if we have a question like e raised to power x into cos x, how will you differentiate these type of question? Or if you have y is equal to ln x over tan x. Now you cannot divide or multiply these type of functions. So अब आपको इसका मतलब you need a rule through which you can differentiate the product and quotient. And those rules are called, one of them is called product rule and other is called quotient rule. Use कहाँ पे होंगे? When you have to differentiate the product. See, write the rules first. First, the product rule is these two rules will also be given in the formula sheet. Product rule is if you have y is equal to two functions, say the two functions, one of the function is f of x and other function is g of x. Both functions are getting multiplication. And if you want to differentiate them with the help of product rule, and there is no other rule except product rule, अगर product की form में हो तो सिर्फ product rule ही हमेशा apply करेंगे. So what is that rule? Its differentiation will be dy by dx will be derivative of first function second as it is plus derivative of second function first as it is. Mean first function is f of x, second function is g of x. What's the derivative of f of x?
we used to write f prime of x for the differentiation. Derivative of first function, second function g of x as it is, plus derivative of second function g prime of x into first function as it is. Very simple. That's the product rule. If you want to differentiate a given question in which two functions are in the form of product, how will you differentiate? Differentiate first function into second function as it is, plus second function का differentiation and first as it is. Second is quotient rule. Means when they are dividing, if you have a question y is equal to f of x divided by g of x, f of x divided by g of x. So here I will say the numerator f of x as first function and denominator g of x I'm saying as a second function. So how to differentiate this? Its differentiation rule mean quotient rule is सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में जो आ रहा है g of x, denominator में you will write g of x as it is and its square. The denominator will have g of x as it is, no change, but its square of the denominator. And what will you have in the numerator? In the numerator, derivative of first function second as it is minus derivative of second function first as it is. Mean f prime of x, g of x as it is, minus derivative of second function first as it is. So these are the two rules. One is product rule and other is quotient rule. We'll see through examples how to apply these two rules, but see the difference. First derivative of first second as it is plus derivative of second and first as it is. Same is the case with division, but उसमें minus आता है. Derivative of first second as it is minus derivative of second and first as it is. Additionally क्या होता है? In quotient rule, denominator में you will have the square of denominator. Let's see some examples. If the question is to differentiate y is equal to sine x cos sine x, sorry, x square sine x, x square sine x. So what rule should be applied here to differentiate this? Product rule, multiply ho rahe. Let's apply that product rule. So dy by dx is equal to, Taimur, what's the differentiation of first function? What's the differentiation of x square? 2x. So rule is derivative of first, second as it is. So we'll write sine x as it is. Plus, now the derivative of second function. What's the differentiation of sine x, Taimur? Rule जो first page पे हमने लिखे हैं differentiation के, sin x की differentiation is first cos x. So differentiation of sin x is cos x and first function x square as it is. और बेहतर x square को आप पहले लिखें. So it is 2x sin x plus x square cos x. Why I'm saying you should write x square before cos x, because sometimes आप इसको x cos x into x square cos x cube लिख देते हैं, but actually x square is not angle, x is angle, तो multiply नहीं हो सकते. So with the help of product rule, we have differentiated x square sin x. Next question, y is equal to x cube ln 5x, not 5x, simply x, ln x. X cube times ln x. You apply product rule and differentiate this.
G. Ahsan. Ahsan Zulfikar. What's the differentiation here? 3x square ln x plus x square. You are saying 3x square ln x plus x square. Yes, how is saying it's x square? Basically, when you differentiate second function ln x, it will become 1 over x. And first function x cube will become as it is. In the next step, you can directly लिख सकते हैं, but just to 3x square ln x plus x squared. That's the differentiation. G, any problem? Is that clear? Next question. If we have y is equal to e raised to power 5x cos 3x. Okay, differentiate this now. Definitely they are multiplying, so you will apply the product rule. Derivative of first function second as it is plus second function first as it is. G Daniel, I hope you have completed. What's the differentiation? So it's 5e 5x cos 3x plus e 5x times minus 3 sin 3x. Right. So differentiation of e raised to power, first function, the differentiation of e raised to power 5x is 5 e raised to power 5x. And I'm writing second function cos 3x as it is. Plus, now the differentiation of second function, the second function is cos 3x. And we know its differentiation is minus 3 sine 3x into first function e raised to power 5x as it is. So थोड़ा सा simplify बेहतर हो सकता है, मीन ब्रैकेट्स रिमूव कर दें जस्ट. So it will be 5 e raised to power 5x cos 3x minus 3 e raised to power 5x sine 3x. Some examples of quotient rule now. Mikhail. Okay, next question is, if we have y is equal to x cube over sine x. Now division. So we need to apply the quotient rule now. So we know in the quotient rule, the denominator will have the square of the denominator. So denominator will have sine square x. And in the numerator, differentiation of numerator, denominator as it is minus differentiation of denominator, numerator as it is. You can say numerator as first function and denominator second function. Now Shamir will tell us the numerator. Yes, Shamir, what will be the numerator? Shamir, are you attempting the question? I don't think so.
सर मैंने नहीं अभी किया हूँ, मैं कर तो आप कब करेंगे? सर मैं कर जी ईशा. Yeah, and I have written the denominator. So what will be the numerator here? Good. Minus x cube cos x, right? So the derivative of numerator mean x cube is 3x square and second function sin x as it is, minus the derivative of sin x is cos x and x cube as it is. So you can write x cube cos x, that's the answer. If we have y is equal to say ln x over tan x, just apply the one step mean in which you have to do the differentiation, no further simplification required here, just differentiate. So in the denominator we will have tan square x. In the numerator the derivative of ln x is 1 over x, tan x as it is, minus the derivative of tan x is secant square x and ln x as it is into ln x as it is. Gee, I hope you have written the same. Okay, next y is equal to sine square x cos square x. Sine square x into cos square x. Differentiate this.
G, done. Amir is saying 2 cos. Okay, wait. He's saying 2 cos x cos square x minus 2 sin x sin square x. G Abdullah, is that correct? He's saying it is 2 cos x into cos square x minus 2 sin x sin square x. ये सिर्फ मैं थोड़ी देर के लिए आपको बताना चाहता हूं कि साइन स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन, सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है वो. If the question simply differentiates sine square x, so how will you do that? First you will apply power rule. Mean 2 will become coefficient. Sine में कोई change आएगा sin x में? It will stay as it is. So whole 2, the coefficient will become 2. Sin x whole power 1 will stay as it is. Then the derivative of sin x is cos x. So this is the differentiation of sine square x. इसी तरह, if I have cos square x, what's the differentiation of cos square x? First, I need to apply whole power rule, mean 2 cos x as it is whole power 1, and then the derivative of cos x is minus sin x. So ये मैंने अगर इसको मैं लिख लेता हूँ minus 2 cos x sin x. So here I have written the differentiation of sine square x and cos square x separately. Now let's apply here. If you want to apply the product rule, so first the differentiation of sine square x. What's the differentiation of sine square x? It's 2 sin x cos x. 2 sin x cos x into second function cos square as it is. I'm applying the first, mean the product rule. The differentiation of sine square x is 2 sin x cos x, and second function cos square x as it is, plus differentiation of cos square x. Now what's the differentiation of cos square x? We did here. The differentiation of cos square x is minus 2 cos x sin x, or you can write minus 2 sin x cos x. So it is minus 2 cos x sin x. This is the differentiation of second function, this one, and first function as it is. Mean sine square x will come as it is. This is a step where we have applied the product rule. This is the differentiation. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, थोड़ा सा जो हो सकता है वो करते हैं. So dy by dx will become 2 sin x cos x into cos square x will become 2 sin x cos cube x minus 2 sin cube x 2 sin cube x cos x. So this is the differentiation of y is equal to sine square x cos square x. G, is that clear? Any question? So almost 2/3 of the topic is done. कल हमारी इस टॉपिक की जो explanation होगी वो complete हो जाएगी, and then we can start the past papers. Thank you so much. See you tomorrow. Allah Hafiz.